She's one of the very great yogi and she's an inspiration to all of us. आदरणीय सुदेश दीदी जी, आप भारत में Didi has और served अनेक देशों में in India as बाप well in दादा का many नाम many रोशन कर रहे countries हैं. and glorifying Baba's name आपको all over बाल्यकाल the से ही world. बाबा का परिचय प्राप्त हुआ. She came into knowledge at a very आप young ज्ञान age. की बहुत गहनता में जाती हैं Didi goes into और depths of इसीलिए आज का ये knowledge, बहुत प्यारा विषय and that is why today we have chosen चिंतन के लिए this आपके लिए रखे हैं, topic. जिसका विषय है ईश्वरीय सुख का अलौकिक So today's अनुभव. topic is divine इस विषय के ऊपर हम दीदी जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे unions of divine और दीदी जी के कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी सुनेंगे. and we'll also listen to personal पीछे जो experience of बैठे this हैं from भाई बहन, Didi. अगर आगे आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा. All those seated back can come और forward. जैसे कि आप सबको बताया गया, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहते हैं और राइट साइड में सुविधा है. और इंग्लिश वाले कोई इधर से हैं तो उधर है तो सब हिंदी वाले. दीदी, आपसे हम आज की सुंदर विषय के ऊपर ही जानना चाहते हैं. Today we are going to जैसे कि explore विषय this है topic, ईश्वरीय सुख का अलौकिक अनुभव. तो experience पहला of मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीदी, godly unique ईश्वरीय happiness. सुख क्या है What is और ईश्वरीय सुख का godly अनुभव or हम supersensuous कैसे joy कर सकते हैं. and how can we experience it? ओम शांति. Om Shanti. इस संसार को In this world, कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है it's a land of karma. और उस कर्म क्षेत्र में ड्रामा क्षेत्र पर ड्रामा भी कहा जाता है. This land रंगमंच of भी कहा जाता है. karma is also called the world stage उसमें दुख और सुख का or खेल है. drama. It is the ये बाबा play की of मुरली में sorrow and दिन happiness. रात Baba दुख और describes सुख as day and night or sorrow and happiness. बहुत बारी आता है. आज भी आया ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा Today की also रात, Baba mentioned the विष्णु day का of दिन, Brahma विष्णु की रात. and night of Brahma, तो day रात of का Vishnu मतलब and night कोई of Vishnu. अंधेरा सिर्फ So the सूर्य night ना is चढ़े वो not नहीं, सूर्य छिप गया नहीं. absence of light. It is the पर रात का ignorance. मतलब भटकना. It is the confusion रात of का intellect. मतलब अज्ञान, Night अंधकार. means the ignorance, darkness of और जब ignorance. अंधकार होता है When there is तो darkness, मनुष्य आत्मा के पास कितने भी सुख के साधन होवे, when there's darkness, how मिसाल many के ever तौर पर comforts we have at आपके physical घर में level. फर्नीचर फर्स्ट क्लास भी हो, For example, you have best of पर तो furniture अगर at your अंधेरा है home, तो but if there is आप कभी darkness, टेबल से आपका टांग हिट करेगा, then कभी किसी दीवार से you हिट would करेगा. hit with different सुख objects. की चीज भी आपको And सुख नहीं देगी, so दुख even का the कारण बन objects of जाएगी. comfort would no तो longer give comfort. अज्ञानता के अंधकार में Similarly, in the मनुष्य darkness आत्माओं को of ignorance, so भौतिक दुख भी है all the तो souls आध्यात्मिक दुख भी है. are experiencing both physical यानी sorrow आत्मा and दुखी है. spiritual sorrow. मन अशांत है, Mind is sorrow. उसका कॉन्ट्रास्ट है. यानी So it's a अति नित्य contrast. It's a सुख contrast तो to the सुख है. current सुख state. मतलब Now we are प्रकृति discussing के about पांच that kind of तत्वों happiness which is द्वारा beyond जो these five हमको elements. सुविधाएं मिलती हैं, So all the happiness, comfortable comforts life we व्यतीत have करते हैं. are based on कहते the बड़ा सुखी है. elements, based on the physical level भाई comforts. इस बात में सुखी है, We तन say, बड़ा तंदुरुस्त है, we say that my body is है. very healthy, I'm happy. मन बड़ा इसका शांत रहता है. If the mind is peaceful, धन if, बहुत the, है, बड़ा if we सुखी have a है. lot of money, then we बच्चे say we बड़े are अच्छे हैं, happy. वाइफ बड़ी अच्छी है, We have a good faithful है, family, एक दूसरे के प्रति we have good बड़े सुखी children, हैं. good spouse, and I'm very happy तो with all जो of सुख this. देखा So these are all इस शरीर के साथ कनेक्टेड है. comforts परंतु connected जो ईश्वरीय with the सुख body. है, But the वो godly godly happiness, सुख है, godly रूहानी सुख happiness or the spiritual happiness परमात्मा को is connected to शरीर the नहीं soul. है. God, परंतु परमात्मा the की Supreme महिमा Soul, क्या does है? not have body. But what is His greatness? चित्त, His, आनंद. His the truth, His अभी bliss. तीन चीजें होती हैं.
एक है खुशी, There are three aspects. One is happiness. लेकर बड़ी खुशी हुई, We say, I feel very happy meeting you. कॉन्ट्रास्ट में है। So we say, Kushi, the happiness we use in the contrast. तो दुख जो है वो मन की बात है। But in Hindi, there's one more word, dukh, which means sorrow, and sukh. मन की चीज है। So this belongs to the mind. सुख है, One is at physical level, happiness. The other is one of the mind. We might have all physical happiness, and which we experience through these senses. तो कलयुगी दुनिया में In this Kali Yuga world, and even from Dwapar Yuga, भंगुर जिसको बाबा we have been getting temporary, limited करो happiness, like Baba mentioned today, droppings of crow. कि इस गंदे साधनों से पब है, क्लब है, ड्रिंक So Baba says, with all these limited enjoyments like going to pub, drinking, all of these things give very, very temporary happiness, but the end result is sorrow. Hence it is called droppings of crow. में दुख समाया हुआ है। In that happiness there's sorrow inbuilt into it. ये सुख But godly happiness परमात्मा को is different. परे है वो, Actually, God is beyond sorrow and happiness. भोगता हुआ करता No, God says, I don't experience anything, I'm beyond all of that. But still, He's ocean of bliss. He's ocean of happiness. So, which kind of happiness is this? दुख हरता सुख करता है। It is said that God is bestower of happiness and destroyer of sorrow. को आंतरिक So, what is the difference between this kind of happiness? अंदर का सुख है, It's inner happiness, इंद्रियों की जरूरत नहीं। which is not connected to the senses. जो इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स हैं, It is connected to the यूज करने से सुख मिलता है। organs of the soul. कहते हैं गॉडली ब्लिस, It is called godly bliss or divine bliss कहा जाता है अति इंद्रिय or super sensuous joy नहीं है, beyond the physical organs. ये सुख और दुख Not like God does not have organs, but He's always in bliss. इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है। So the soul is not connected कनेक्टेड बात है, with these उससे सुख मिलता है। physical organs, sense organs. आपने इसको इतना अच्छा स्पष्ट किया कि जो भी हमको साधनों से So Didi has described very beautifully the first question. ईश्वरी सुख नहीं कहेंगे, केवल आत्मा So को जिसमें godly happiness is not ईश्वरी सुख कह सकते from हैं। the physical senses, but it is something we get from God. लौकिक संबंधों का So the next question व is, लौकिक प्राप्तियों का सुख तो स्पष्ट दिखाई देता है, we can clearly see प्रकट कर सकते हैं। happiness from Lokik relations एवं प्राप्तियों का and Lokik अलौकिक अनुभव इसे हम कैसे objects. But how do we differentiate between what we get from God? मिलता है। जी इस लोक में 5 तत्व हैं, So Didi is saying, शरीर है, in this world we have 5 elements, का मतलब है and this body is also made up of 5 elements. So spiritual means it is unique. और नहीं है। You cannot compare to the physical things. अलौकिक एक ही है, In Hindi, the word alokik means beyond. के साथ भी एक डिवाइन पावर See, even the relations we have with God is बदलने beyond, one of beyond. सुख में The Lokik ones are constantly changing, ever changing. परमात्म सुख है, अलौकिक सुख है। The godly happiness or the divine happiness, आत्मा की जो अलौकिकता है, परमात्मा की it जो is a आत्मा की शक्ति है, unique वो happiness. परमात्मा लौकिक साधनों से नहीं देता है, So God does not give happiness through साधन physical objects. संबंध से देता है। He gives through spiritual relations अव्यक्त मुरली थी and through knowledge. कि कलयुग के दुनिया में संबंध Baba told in today's Murli that in Kali Yuga, today's world, all the relations are source of bondage and pain. तो ये परमात्मा Whereas the relationship with God संबंध से होती है। is a source of happiness. अब वो क्या है?
आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध So now it is the eternal relationship of the soul and the Supreme Soul. It doesn't belong to this body. दिखाई नहीं देने वाली है, Soul is not visible परमात्मा भी दिखाई and देने God is वाला not नहीं है, visible. परंतु जो उससे प्राप्ति होती है But the attainments what we have प्रकट होती है। are also visible at the physical level. इंडेक्स ऑफ माइंड, They say face is the index of mind. मन में फीलिंग आ रही है, So whatever feeling I get in my mind, हो रहा है, that's experienced and it is visible on the face. बुद्धि की पहचान, बुद्धि की It's a recognition with the intellect and the concentration of the intellect and the experience of it. लॉस्ट The soul is immersed in the love or the bliss. So such a thing is unique. It is called alaukik, beyond, where there is no need for physical organs. अपने ऑर्गन्स चाहिए, The soul needs its own organs, which are mind, intellect, and sanskar. सुख है, So this supersensuous joy is experienced by the mind. जावे The experience from the mind. बुद्धि उसको महसूस करे And the intellect experiences that it is real. और एक्सपीरियंस वो फिर बॉडी से एक्सप्रेस होता है, And that experienced is expressed through the body, through the vision, वो लौकिक through the words. लोक में होता है, Expression is definitely in this world, ठीक होता है इस लोक से परे। but the experience belongs to the soul. सबको समझ में आ रहा है दीदी की बातें? Is it clear? Is it? दीदी कितना मतलब कोई बात समझा रही है कि Didi is explaining such प्राप्ति deep है, लौकिक aspects. संबंध है, उसका सुख क्लियर दिखता है। Didi is saying अलौकिक सुख और अलौकिक संबंध जो लौकिक प्राप्ति होती है, attainments are visible easily, but the spiritual attainments प्रकट होता है। are experienced by the soul, but eventually they are also expressed दीदी जैसे at physical level. जो है हम स्थूल में देखते हैं, किसी को मकान The का next सुख रहता है, question. किसी को See, some people have a lot of happiness of wealth, some have a good car, some have a good house, some have all the comforts at house. We can experience all of this. बाबा के साथ जो प्यार का अनुभव, What about the godly love? अनुभव को हम निरंतर कैसे करें? How do we experience God's love all the time? मैटर से So Didi is saying this is the difference. है, चाहे सोफा है, Didi is saying all these locking comforts, good bed, good sofa, good car, सुख मिलता है, all these are परंतु not just from money, परमात्म सुख मन से मिलता है, मनी से नहीं मिलता, but God's मान से मिलता है, happiness, वहाँ सुख स्वमान से मिलता है, the happiness of God is experienced चीज अलौकिक through the mind. दुनिया का कॉन्ट्रास्ट उसमें नहीं है, पर दुनिया में रहते मिलता है, By staying in this world, we get it. वाइन है। While staying in this body, we experience it. That's why it is unique. It is divine अभी देखिए and it's alokik. साधनों का So all the physical comforts, पेरिशेबल है, they're perishable. और उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को And to attain them, we have to depend on so many things. और जो परमात्म सुख है वो But godly happiness is a constant one शिव, because God is a constant one. He is a benefactor. जब आत्मा अपने So when the soul स्वरूप में स्थित is stabilized in its original stage, गुण से then the qualities of the soul परमात्म गुण का कनेक्शन जुड़ता are है, connected with the qualities of the Supreme. सुख अनुभव होता है। Then we experience happiness. का पंखा है, For example, the fan. का स्विच ऑन Unless you turn on the switch, you cannot enjoy the air. तो पंखा You cannot, without even after having fan, you cannot enjoy it if you don't switch it on. सुख करता है, Same thing with God. अनुभव नहीं होता, Why we don't experience happiness from God? God is ocean of love. Why don't we experience love? The reason is नहीं है, there's no connection. कनेक्शन को मैं कहती हूँ संबंध नहीं है, The connection is through relationship. संबंध है, कनेक्शन है, Connection ऑन and relationship, and कॉन्शियसनेस नहीं है, we should also have the consciousness to turn on it.
सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं है, If we do not have practice of soul consciousness, क्वालिटीज इग्नाइटेड नहीं हुई है। then these qualities are not ignited. कॉन्शियस का मतलब है अवेकनिंग। So what is conscious? का मतलब It means awakening. It is using them actively and having right communication, उसकी प्राप्ति को and also कर सके, attainments, assessment of the attainments, and also express them. उसको कॉन्शियस कहते हैं। This is called conscious. इंद्रिय सुख है, So this super senses joy is unique because होते हुए भी it is subtle, but also it is visible. और इसीलिए भी हम देखते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो है जो दिख रहा है उनके तरफ भाग रहे हैं। जो So people in the world are running after physical comforts. जो सुख मिलता है वो दिखता है, इसीलिए लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। People in the world are running after visible comforts, but this godly happiness is incognito. Only those who experience this stick onto this path. है अलौकिक, इसलिए भी यूनिक है। That is why it is unique, Didi says. एग्जिस्ट करता है, It exists. आप नहीं कर सकते, इसलिए यूनिक है। It is unique because it exists, but you cannot capture like in a photograph. इफेक्ट करता है, It impacts, it affects, फोटोग्राफ नहीं ले but you cannot capture it in a photo, this happiness, क्यों कि ये मेटाफिजिकल एनर्जी, because it's a metaphysical energy. जो भी चीज मेटाफिजिकल या सटल है, Whatever is metaphysical and subtle is unique. कंपेयर नहीं कर You cannot compare to physical energies. एग्जिस्ट करके It exists यूज करा रही है। and it is giving experience. As you see, फूल है, the flower, फूल का कलर भी दिखाई पड़ रहा है, you can see the color of the flower, you can see the leaves, शेप भी दिखाई पड़ रही है, you can see the shape, टच करें you can even touch it, सटलिटी भी दिखाई पड़ रही है, you can even feel the texture. सुगंध, But what about the fragrance? You cannot see the fragrance. यही फूल की विशेषता है। Fragrance is a speciality of the flower. It's a unique thing. इज यूनिक है। It's a speciality of the flower. लव की गॉड Similarly, godly love is unique. की पावर God's powers are unique, सेल्फ इज यूनिक, and the way is also unique. दुनिया की तरह नहीं है। It is not the physical way, it is a unique way. आत्मा का ये शक्ति है। So the power of the soul, में भी जितना जितना नजदीक सटल होता जाता है, the more and more you get subtle in the energies, जाता है। it gets beyond and beyond. वर्ल्ड, It goes beyond the world. बियॉन्ड द वर्ल्ड, They say कुछ बहुत अच्छी चीज हो गई, if there's something very nice, they say it's beyond the world. वर्ल्ड में नहीं पाया जा It cannot be got in this world. क्यों नहीं पाया जा सकता? Why? कि वर्ल्डली मनुष्यों के पास वो नहीं है। Because it's not present with the worldly people. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम चाहते हैं We feel sorrow because we search in the wrong place and with physical people. आप अगर सब्जी वाले की दुकान के पास जाओ और कहो Say, भाई हीरे दे दो मुझे, you go to a vegetable shop and ask for a diamond. हीरे हीरा कहाँ से? He cannot give a diamond, he can only give vegetables. सोर्स नहीं जानते। So we do not know the source of this unique happiness. यूनिक मैंने अद्वितीय जैसा दूसरा कोई नहीं। There's no comparison to this kind of happiness. Super sensuous joy. उस एक से So, मिलता है। it is possible to receive this only from the one. When you have this realization, you will never be sorrowful. दीदी हम और इसकी गहराई में थोड़ा Next आपसे question. प्रकाश चाहेंगे। बाबा कहते हैं कि मुझे सर्व संबंध से याद Baba says, remember me with all relationships, संबंधों का सुख लेना है। or get all the attainments through all relationships. इसका आधार क्या है? So what is the basis? What is the basis for that? बाबा से सर्व संबंधों का How can we attain अनुभव कर सकें? happiness through all relationships? उस सुख का So Didi says, all relationships संबंध आत्मा का है। belong to the soul. तो जब आत्मा When the soul, सर्व शक्तियों को with all its powers, when it develops its powers, the more it develops its inner powers, मैग्नेटिक
एनर्जी the more its magnetic energy, खींचता है, as a magnet attracts magnet, परमात्मा का और आत्मा का जो संबंध है so the relationship is not a physical one between the soul and the supreme soul, पिता के संतान है, where the child नाशी होते भी संबंध नहीं है। we are the child of God, but still we do not have the relationship because we do not have communication. संबंध का मतलब So the meaning of relationship is communication. पॉजिटिव एनर्जी कम्युनिकेट विद पॉजिटिव, So the communication means pure consciousness communicating with pure consciousness, or positive energy communicating with positive energy. When you are in body conscious stage, you are under the influence of matter, इसी लेवल पर रहती है। and you are at that level. ये बता रही हूँ कि तरीका जो है वो ठीक होना So the method has to be right, और उसका सुख का संबंध and then संबंध जोड़ने की पहले विधि चाहिए। and you need to know the right method for it. संबंध अगर है ही नहीं, If you don't have any relationship and there's no communication, बुद्धि नहीं है, then there's no experience. तो ये हम आत्माओं का So the soul संबंध can have all relationships with God. कंपेयर करना होगा। So we have to compare with Lokik relationships. Say, for example, the love of mother. How is it? छोटे बच्चे भी The more है uh, पर डिपेंड करते when the child is small, he is innocent. को माँ खींचती है। He is dependent on mother, and the child attracts mother, and mother is also attracted towards the child. अगर मैं अपने Similarly, अपनी इनोसेंस को इमर्ज करूँ I need to immerse my innocence रिलेशनशिप in the relationship as a mother को भूलूं, and forget this body consciousness. Forget about the past. एक्सपेक्टेशन There's no expectation of future. इनोसेंस का मतलब ये है This is what is innocence means. नहीं कर रहा हूँ। I can't compare with past. बच्चे को पास्ट कंपैरिजन नहीं है। A small child cannot compare of past. There's no dependency on past. Similarly, while living, we need to die. This is what it means. माँ के संबंध का That is when कहीं से you experience the love from mother. ये है कि मैं मरने से पहले जीता हूँ। So the beautiful thing is we have to be born first. क्या हुआ, पुराना मरना पड़ेगा, It means that you have to die from the old. बन सकता हूँ। Then you can become child of the mother. का फुल अटेंशन मेरे पर, Then you have full attention of mother on you. परमात्मा के साथ हमारा यूनिक रिलेशन This is how we have unique relation with God. निराकार है। So God is Nirakar, कार को हमको incorporeal, आत्मा को and me, the Nirakar soul, has to experience in the physical body. शरीर में आके होता है। The soul experiences only in the body. So while being in the body, you have to experience the incorporeal supreme. बनाना पड़ता है। So जैसे जनरेटर की एनर्जी like the energy from the generator आई, came into this microphone. के बीच में ट्रांसमीटर है। In between there's a transformer, transmitter. बॉडी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए So to transmit, बना देता है। तो यूनिक है। here Baba uses Brahma Baba, मदर के बच्चे uses Brahma Baba, who is the male mother. कनेक्शन है। So if we have connection with Brahma Baba, then we would get परमात्मा love of mother. प्यार परमात्मा से आ रहा है, We're getting love from God, माँ के थ्रू, but getting it through mother, ब्रह्मा माँ के थ्रू मिलता है। through Brahma mother. और वो ब्रह्मा माँ फिर कैसे देती है? So how does Brahma mother give love? गीता माँ के थ्रू देती है। So Brahma mother gives through Gita mother. That is why Baba said yesterday, you are Brahma, Kumar and Kumari. ज्ञान गीता That is why Baba said you are also the child of knowledge, knowledgeable children, knowledgeable Kumar and Kumari. प्यार अगर लेना है, So to get the love of mother, you need two things. ब्रह्मा के साथ मेरा संबंध, My connection with Brahma Baba.
recognition ये ब्रह्मा through him. सॉकेट है, Brahma Baba is like a socket. प्लग इन करना चाहता We have to plug in. एनर्जी वहां से आएगी। You get the energy through the socket. So Brahma Baba is like socket. गाया है दीदी, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, In Bhakti, there's a song, you're the mother, you're the father, you're the teacher, you're the guru, you're the relation, you're everything. ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हम शिव बाबा का अनुभव कर सकते हैं सब संबंधों का। तो परंतु माँ का संबंध Especially the relationship of mother. ज्ञान के आधार से प्यार मिलेगा। You experience on the basis of knowledge. We receive love on the basis of knowledge. रीति से We always imagine love to be physical. Somebody touches us, put us in the lap. No. ठीक है, This is spiritual. There is no question of physical in this. आत्मा को परमात्मा ने Here, किया है। the soul is being adopted by the Supreme. अडॉप्ट करके After being adopted, as a father, का प्यार है पवित्र पालना। so we get pure sustenance. ज्ञान दूध रोज Baba gives us the milk of knowledge every day. वाला पिता है, He is the one who gives. माता के थ्रू है, He gives through the mother. है परमात्मा पिता, The Supreme Soul, incorporeal, साकार के द्वारा is a father, but he gives through the corporeal Brahma Mother. मामा वो उसी ज्ञान जो मिला हुआ दूध कहेंगे, So, उसका मक्खन बना के हमको so खिलाती है। Brahma Baba makes मैं थोड़ा सा butter और इसमें and और आपसे feeds us स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि butter हमारा of जो knowledge. लौकिक आकर्षण है या लौकिक So, रिश्ते one more का सुख, question. वो तो हमको स्पष्ट दिखता आया है। See, we very easily understand Laukik happiness. तो वो बाबा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाए। So, और how do लौकिक we प्रति आकर्षण increase our attraction towards Supreme and reduce attraction towards Laukik? ज्ञान को समझता जाता हूँ। So, the more and more we understand knowledge, ज्ञान माँ का बच्चा बनाना, because I'm the child of knowledgeable one, ज्ञान कुमारी I'm the knowledgeable child, Kumar, Kumari. जाएगा। So, it is through knowledge शरीर का संबंध that this is a relation of my body. माँ की एक्सपेक्टेशंस और मेरी डिपेंडेंसी The expectations of the mother नहीं करने देगी। and the dependency will not let me experience happiness. It becomes like a bondage. लौकिक से मैं जब ज्ञान की गहराई समझूं, So when I understand the depths of knowledge, कोई समझते हैं प्यार का मतलब स्थूल a lot of think love is physical. लव It is emotional love. का इमोशनल लव नहीं है। God's love is not emotional love. गॉड का जो लव है वो समझ निश्चय बुद्धि से विजय So God's love is through faith प्यार बढ़ता है। and faith and love. समझ में आ गया, When you understand this, पालना माँ पालना देती है, my sustenance, पालना फिर जो ज्ञान परमात्मा से डायरेक्ट नहीं होगी, so my sustenance is through Brahma Mother. प्यार है, The knowledge which I'm receiving, प्यार है। knowledge is love. अगर गहराई नहीं है, If you don't have depth with knowledge, there's no connection, ब्रह्मा से संबंध, there's no relationship with Brahma Baba, परिवार से संबंध, nor with the family. इसीलिए That is why ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई you have to apply knowledge practically, then you would experience. जी बहुत अच्छा दीदी। तो माँ का संबंध, हाँ हाँ फिर फादर का संबंध, Then the relationship of father. इनहेरेंट पर्सनैलिटी है, It is like my inherent personality. In Laukik, संपत्ति, the physical अधिकार, inheritance is like our birthright. गॉडली Here as well, the godly inheritance or godly property is purity. तो ब्रह्मा कुमार प्योरिटी मेरी पर्सनैलिटी है। So, as a Brahma Kumar, purity is my personality. The more purity I have, अंदर का सुख अनुभव, then I experience inner happiness. जब आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप तो साकार बाबा के साथ रही, मम्मा के Didi, you साथ have रही, lived with आपको सामने Sakar दिखाई Baba, दिया है शिव Mama. बाबा का प्यार, You have ब्रह्मा बाबा के practically तन में आकर seen के Shiv बहुत Baba's आपने गोद में love खेला है, खाना खाए हैं, in Brahma आप उनके Baba. साथ मिले हैं। You have हम लोग तो कभी played साकार with में देखे him. नहीं You हैं। have been very close with him, even at physical level. Now everybody is gone. Mama is not there. Baba is not there. दादी मिलती थी वो भी ऊपर। Even Gulzar Dadi is not there. How do we experience now? देखिए बाबा ने मम्मा ने चाहे साकार So Didi is saying, see, Baba and Mama has given in physical way, but
Many have taken then, but many have left as well. वो साकार के मिलेगी Because चीज एक सिर्फ Because what you get physically, it's only a temptation. But the reality, को संभाल के रखना, you have to वो जब sustain it and maintain it through knowledge, through the depth of knowledge. टेबल बनती है। Then our stage becomes stable. वास्तव में ब्रह्मा वाले In reality, even if Brahma Baba is not here, कोई चीज समय की बात होती है, it's also the aspect of time. समय कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, Sometimes some things are made in the factory only at that time, मिल रहा है, or we get fruit only in one season. उस वक्त का जो टेस्ट है वो The taste in that season is very different. उस चीज का जो फिर मिली हुई चीज है उसका इफेक्ट So the effect of that, चीज है। मानो किसी ने फैक्ट्री में सोप तैयार किया, suppose a factory has manufactured soap, फैक्ट्री चाहे जिसने तैयार किया whoever has set up that, he's still not there, चल रही है, but his company is running. सोप की क्वालिटी वही है, So the quality of the soap is the same. वही होगा, So the effect is the same. इफेक्ट था, Or whatever is the effect before. इसमें चेंज नहीं हुआ। So there is no change in God's knowledge. ज्ञान मदर है, That is why knowledge is mother. This is an important aspect. That is why it is Gita Gyan, Gita Gyan. That's what Baba constantly says in every murli. साकार पर डिपेंडेंट है, If you are just dependent on Sakar, जैसे शरीर में रहने वाला नहीं है, then that is not permanent as well. पावरफुल है, These souls, साकार के देख without Sakar, they have connected to Supreme. They are more powerful souls. की चीज नहीं, They did not get any physical things. It is only through their stage that they are forging connection. Hence, they are more powerful, more dedicated. अपना अपना अंदर का पुरुषार्थ ज्यादा होगा, So they have to put in more internal effort. ये नहीं है कि साकार So it is not necessary that we meet Sakar Baba, रहने वाला नहीं है, because Sakar physical body is not permanent. जो बाद में ज्ञान में आए हैं उनके मन में ऐसा आता है दीदी कई बार की But Didi, a lot of people पैसे बीतेगा कि feel bad that what every kalpa I'll miss Brahma Baba and Mama. That is why I asked this question. So Didi says, और फिर चला जाए, see, you see Baba and then leave, then what is the point? It is better नहीं पाया तो अब हम अपने you come late and you experience in your way हे पिता परमात्मा and prove तेरी संतान that I'm child of God. साकार में माँ मेरी चली भी गई, Even if my mother has left in the corporeal, but we are still the child of God. अगर निश्चय में है, If you have faith in knowledge, पर माँ नहीं भी है, even if Sakar Baba is not there, एग्जिस्टेंस तो है, but my existence is there, एग्जिस्ट करता है, I exist. फिर ज्ञान ही वृद्धि है, So the method, there is no other method other than knowledge. without knowledge putting into action, There is no other method without knowledge putting into action. योग नहीं बनाया है, Unless you convert knowledge into yoga, संबंध का सुख मिले कैसे, then you cannot receive happiness. नहीं बनाया है, Till you make knowledge into yoga. में निश्चय नहीं है, यानी And if you don't have faith नहीं है बुद्धि में, in the intellect, ये अनुभूति नहीं हो, then you will not have experience. से सुख मिलता है, And you experience हमको क्रिएट करना है, बाबा नहीं क्रिएट करना, experience. यही है कि हमको ज्ञान की पराकाष्ठा में जाना है ज्ञान को अच्छी तरह से So समझना in है, केवल essence, ऊपर से नहीं we need to और ज्ञान से experience समझ लेंगे knowledge तो and हमारा योग apply भी it. अच्छा लगेगा, और Then जो we हम can have complain yoga करते हैं कि also. हम लेट आए, Then you will हमारा not क्या complain, कल I कल came ऐसा late, समय आएगा, I will come तो every वास्तव में इस kalpa like ज्ञान से this. हम We अच्छी will तरह not से go into अनुभव all कर these सकते हैं। things. सूक्ष्म मतलब में जाके अनुभव कर सकते हैं ना दीदी बाबा से। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, So this is a contrast. एक बाप की प्रॉपर्टी See, in the Laukik, we get the property of the father, हक रहता है, and also का हक रहता है, grandchild को डबल फायदा है, has ये है authority or right over grandfather's property. कर्म के हिसाब से, हाँ हाँ So you get it कर्म के हिसाब से, as per your past karma as well. और लौकिक से मुझे प्रेजेंट कर्म के हिसाब But in this alokik, you would get by present karma, not by past karma. से ये है कि मुझे परलोक में भी मिलनी है, I have to get in the future and here as well. अपने प्रेजेंट के पुरुषार्थ, It is based on the present effort. वो पुरुषार्थ मेरा फिर क्या है, What is the present effort?
फिर से कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। Again, you have to contrast. दुख मिलता है कोई न कोई भूल से, You receive दुख मिलता है sorrow by misuse and by making mistakes, by wrong use. आग वही है। It's the same fire. आग में हाथ डाला तो If I put my hand in fire, then तो सुख मिलेगा। it gives sorrow. If I cook something on the fire, I get happiness. It's the same thing, but how I use it. My experience is dependent on that. ये सुख मिलना है, So what I have to get in this knowledge, लो है, उसको फॉलो करना। there are some laws we need to follow. परंतु मुझे I found करके रहना knowledge, but I have to also maintain humility. Even if I get respect, I have to remain humility. पर मुझे संबंध से न्यारा रहना है। Though I have relationship, I have to be detached. आत्मा का प्यार Then, पाने का मतलब to receive godly knowledge, न्यारा I have to be detached from the से भी न्यारा, body, ईमान से and also with the detached from body consciousness, and प्रभु का प्यार। be detached from name, defamation, all of them. बहनों का Then I can be ऐसा close to उठता है, Baba. जो मधुबन में आते हैं सेवा के लिए। Many people ask this question, come to Madhuban for seva. तो कहते हैं कि जब तक हम मधुबन में रहते हैं, They say that बाबा के लिए रहते हैं, as long as we stay in Madhuban, ईश्वरी प्यार का, ईश्वरी we सुख का experience अनुभव होता lot of godly love and happiness. But once we go home, है। once we घर go तक back, जाते हैं, कारोबार में once लग we जाते get हैं, busy in ये our जो अलौकिक सुख है, ईश्वरी सुख, physical work, उस अनुभव में कमी आ lockic जाती work, है, ये कायम then रहने के लिए this क्या experience reduces. How do we maintain this? को So to maintain एक्ट चाहिए। जी the act, छोटा बच्चा है, for example, a small child, जो बाप से माँ बाप से मिला हुआ प्यार बचपन में है, so whatever he नहीं मिलेगा। you get in your childhood, बच्चा हूँ as a child, whatever you get in your childhood, you will not get forever. के बनाती है, When you're a baby, mother puts you in lap, से बुला के गले में she'll put you in your lap, she'll feed you. But once you become 5-year-old, mother says, go play, study. Does it mean that mother's love has reduced? हुआ है, No. मेरा संस्कार बन गया है। But it has become my sanskar to experience that. चाहे मधुबन में So whatever we experience in Madhuban, है, what love we मेरा संस्कार receive here, it has become my sanskar. व्यवहार में Then, मेरा वो पावरफुल रहेगा। then करना मेरा when we go into the world, that will remain powerful. करना है। We have to maintain that अलौकिक बन के रहना है। being in the Lokik, I have to become a Lokik and stay. रिवार्ड है सतयुग, That is a reward of Satyug. ऐसे नहीं मिलता। Satyug doesn't come just like that. It is being in Lokik, I have to experience spiritual consciousness. में रह करके Being in Lokik, बनाना है, I have to create spiritual vibrations and consciousness. I have to clear physical consciousness. So the reward of that effort is golden age. सुख को लेने के लिए To experience that happiness, आत्मा को अपना टीचर बनाना। for that I need to make God as my teacher. ऐसे जो सुख मिलता है, So the happiness what we get from teacher, we won't get like this. It comes in the intellect. समझ मिलती है, We get the understanding. नहीं मिलती है We get the training. लाने की। पैसा नहीं देता, Teacher doesn't give money. देता है Teacher gives teachings, intellect, good intellect. ज्ञान बुद्धि में। So the next aspect is knowledge and intellect. बाबा के घर में है तब तक तो यहाँ बाबा मैं बड़ों का प्यार मिल रहा है, So बाबा when we का are in मिल रहा है, Madhuban, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, we are getting घर में Brahma तो बचपन Bhojan. माया रहती है दीदी। We get seniors company. बैठे हैं, But सबके पुरुषार्थ का रिजल्ट है। in the world, we have Maya at every moment. So Didi is saying it's a result of everyone sitting here. तो मैं वहाँ भी करूँ। If I'm alone, बाबा ने हमको then I would get there also. So Baba, to make us experience practically, Baba made into this godly family. परिवार का अनुभव The experience of family we do not get in the world there.
Because we are in the body consciousness, we have और expectations. हमको जो अलौकिक प्यार है And the जो भी होते हैं spiritual love, जानते नहीं है we don't even know each other. कहाँ से आया कोई कहाँ Somebody has come from a different place, from another place. जिस्म से नहीं जानते We don't know each other physically, जो कॉन्शियसनेस है but the consciousness, क्या है ये बाबा के बच्चे आए we have the consciousness, this is Baba's बाबा child. के बच्चे आए हैं This is Baba's child, Baba's child. So we have this consciousness of Baba in our mind. खिला रहे हैं And we also think, see how beautifully they're feeding us, ध्यान रख रहे हैं how much they're taking care of us. एप्रिसिएशन है We appreciate. प्यार दिलाया धारणा ने प्यार दिलाया So what gave that love? It is the virtues that gave love here. Same person. किसी प्रकार से थोड़ा खाना खिलाते समय थोड़ा मेरे से कुछ और व्यवहार करे Suppose if that person doesn't behave properly, कहाँ गया प्यार then even after they feed, we don't feel nice because we experience love through dharana, through virtues. ये हमारे जीवन में धारणा चाहिए So we need inculcation and dharana. बोले दो आपस में रूठ गए If two people are छूट गई upset, सेंटर छूट गया then they stop going to center, they stop listening to murli. फैक्ट है धारणा ही परमात्म संबंध So dharana is the basis for godly love. तो जो विष्णु जी के 4 सब्जेक्ट्स हैं So the 4 subjects of Vishnu, संबंध का अनुभव करना है to experience all relationships in essence, क्या हुआ त्रिमूर्ति का पिक्चर is Trimurti picture और वर्ल्ड साइकिल का पिक्चर or the picture of the cycle कल्पट्री का पिक्चर or the kalpa tree. Just only these 3. मेथड This is my practical method of keeping all relationships with God and relationship with the family. मेन विष्णु है So the main is Vishnu. यानी ये त्रिमूर्ति के पिक्चर में In the picture of Trimurti, main is Vishnu, which is our aim and object. सुख है That's embodiment of happiness. सुख का रिजल्ट है It's a result. Sukh is the happiness is a result. श्रेष्ठ कर्म का It's a result of good karma. कर्म का आधार ज्ञान है So the basis for good karma is knowledge. पहला जो समझ है So the first understanding. या किस चीज का सृष्टि चक्र का ज्ञान So we need understanding of the cycle फिर आई बात of drama. सृष्टि चक्र क्या है So what is cycle? का ज्ञान है It is the knowledge ज्योग्राफी of creation. It's the history, geography. दर्शन चक्रधारी When I spin the discus of self realization. से भी प्यार है So when I do this, then my love जो देने वाला उससे from teacher is forged, from God is forged, from the Father is forged. और व्यर्थ चिंतन नहीं Then I no longer have waste. होगा Then I experience love. होगी मेरी Then परमात्मा my friendship with Him remains. जितना जितना मुझ आत्मा को The more and more अपने साथ फ्रेंडशिप रखनी आती है I know to make friendship with myself. है मेरी पवित्रता ही मित्रता है Purity is my friend. वो बचपन की इनोसेंस है The innocence of the childhood मेरी अपने आप को एंटरटेन करने की विधि है to entertain myself with knowledge. करने की विधि है And also it's a method to make myself powerful. शक्ति What is the power of yoga? जुड़वाती है It makes me connect with everyone, with the उससे Sadguru. मुझे मेरा पास्ट क्लियर होता है Then मेरा my प्यार परमात्मा से Past is cleared, पास्ट मुझे इफेक्ट नहीं then it no longer affects me. हुआ सही दुख The sorrow doesn't affect me anymore. जैसे दर्द है Pain doesn't affect. और दुख है Pain and sorrow are different. डॉक्टर दूर Pain belongs to the body, which doctor takes care, but sorrow doctor cannot take care. मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ जैसे So let बहुत us से go भाई बहन further. हमारे जो उन दिनों को जानना चाहते हैं जब आप Lot of ज्ञान में आई थी new और मधुबन आए brothers होंगे, and तो साकार में sisters मम्मा बाबा want to का know your पालना का experience, स्वरूप क्या था उस समय यज्ञ want में to कैसी पालना मिलती understand थी? आप अपना अनुभव what सुनाइए। kind of sustenance you got in yajna when you came. So Didi is saying it was a practical life of Baba and Mama. बाबा के सामने भी तो कितना अपमान हुआ दुनिया का Baba also experienced lot of defamation in the world. Lots of it. 68 को क्वीन सी है
He said he has 300 queens. He has so many beautiful girls. बदनामी थी। Lot of defamation he had to face. को नशा क्या था? But Baba had a lot of intoxication. This is God's work. मैं तो रास्ते चलते फंस गया हूँ। I am the only. उसने दुख नहीं लिया। He didn't take the pain from that. इस बात को कि झूठ बात है, अपमान नहीं लगा। Though it is false, Baba did not get upset. He always used to say, it is God's task. इतना मेरा धन, He never thought, this is my position. I had such a high position. I had a lot of wealth. अभिमान का, अपमान का जो त्याग था, So the renunciation of को भी भाग्यवान बनाया। fame मम्मा का made us बीमारी तो थी, टेस्ट था बिल्कुल। fortunate. अच्छा, मामा की प्रैक्टिकल Look at Mama, the practical stage of Mama. हॉस्पिटल में थी। She was in hospital when she was ill. चेंज हुआ, डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हुई। There was a change of doctor. देखा रिपोर्ट। He saw the report. अच्छा, तो रिपोर्ट देखा तो मम्मा अब तो बेड पर नहीं थी, Mama was not on the bed. सीट पर बैठी थी। Mama was sitting on the seat and reading murli. ऐसे मुरली पढ़ She was fresh and reading murli. And कुर्सी पर ही बैठी थी। Mama's assistant was also sitting on the chair. डॉक्टर Then the doctor जमुना के पास गया, went to Jamuna Ben रात को नींद आपको ठीक आई? and asked, could you sleep well in the night? नहीं है। And asked, did you not have any pain? कहती मैं कोई पेशेंट थोड़ी हूँ, ये पेशेंट है। Then the Jamuna Ben said, I am not the patient. No, this is the patient. So this is a practical thing. दर्द नहीं है, दर्द होगा। Mama definitely had pain, but she did not have experience of sorrow. Look at Gulzar Dade. तबीयत प्रैक्टिकल बहुत टेस्ट आए। In practically, she had many tests. भगवान उनके तन में No, it is not that God came into her body and gave her extra. No. तो ये रियलाइजेशन जब है तो When you have the realization, then you do not have even expectations on God. विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
सबको अच्छा लग रहा है? Is everyone enjoying? एक्चुअली घूम फिर के जी कहाँ भी जाओ, Wherever you go मेन around, बात है, the main aspect प्यार is है पैकेट में, if you have ज्ञान love, की। the Everything is based everything in the is based in the seed of knowledge. incorporeal becomes corporeal. Incorporeal becomes corporeal. निराकार साकार बन के निराकार रहता है. This is uniqueness. This is uniqueness. हमको भी निराकार को We also follow father follow Father. को We have to follow both the fathers संबंध जोड़ना है तो to maintain connection and relationship. साकार में आया. See, the incorporeal comes into the Sakar, साकार and Sakar Baba, being in Sakar, became incorporeal. So we have to follow both. में रहते शिव बाबा निराकार रहा. So Shiv Baba was incorporeal, साकार coming into Sakar body, and अव्यक्त बन Sakar Brahma Baba became Avyakt सारा कर्म दोनों from the physical. अकेले नहीं. And now both have been doing the action together from Dadi Gulzar. If you understand this secret, then we do not get effect. दुख सुख यूनिकनेस क्या है? What is uniqueness? हमें रहते Being in the world of sorrow, हमको दुख लेना नहीं है. we should not take sorrow. वो देने की बात नहीं है. It is not about giving. दुख की दुनिया है. It is a world of sorrow. There will be sorrow. But I should not take sorrow. उसके प्रभाव मेरे ऊपर We should have that power. प्रभावित होना We should not get under influence. If we get influence, then we feel sorrow. कि माया प्रूफ बनने की ड्रेस पहनी. We have to wear the dress of Maya proof. That's unique clothes. जलता नहीं. It does. डिफरेंट है. पानी And में what, डालो, what is waterproof? रस्टी नहीं होती. What is waterproof dress? Because it has a special coating. So we also have to coat ourselves with godly power, बाबा की नॉलेज है, with knowledge, जो बाबा का ज्ञान है, the godly जो knowledge, बाबा की शक्तियां हैं, godly power. उससे मैं जितना जितना अपने आप को अंदर बाहर If I coat myself inside and outside की जाती हूँ, with sincerity, with truth, with cleanliness, then I'm always happy. Then I experience super sensuous joy. अगर आपको याद हो तो आप पहली बार मधुबन आए होंगे, पहली बार. Didi, when you first came to पहली बार Madhuban, ब्रह्मा बाबा ने आपकी पालना कैसे की? how did you experience your, पालना की तो वो पालना मैंने ली नहीं. how did you experience the first time? पहली बारी जो शिव बाबा ने When I first came, लाइट का अनुभव हुआ, I experienced light through Brahma Baba. I couldn't see Brahma Baba. वो लाइट ही लाइट दिखाई. I could only see light and light. समझे सूरज की लाइट इस पर Then I thought it is the light नहीं थी. वो महात्मा of sun. I didn't understand it was Brahma Baba. I thought it was some guru. एक महात्मा जी की कथा सुनने जा. I thought I'm only listening to a discourse from a guru. कुमारी है ये पता है. I knew it was Brahmakumaris. जी हैं. I thought it was the Guruji of Brahmakumaris. दिल्ली में बाबा आए थे. This is in Delhi. बाबा की बॉडी लाइट ही लाइट दिखाई. So Baba's body was just like light. लाइट I thought maybe it's the light of the body. था. It was a class on the terrace. खुली होती है ना जमीन पर. So the terrace is open terrace. लाइट कैसे महात्मा जी पर So I was wondering how did the light, आया. औरों पर लाइट क्यों नहीं है? why there is not this light on others? जगह बदली की. Then I changed my sitting position. फोकस लाइट की वहीं है. Then still I see the light there. Then again I changed my place and pinched myself. Is it a reality or am I dreaming? बंद करूं आंखें तो I close my eyes. जैसी कूलनेस. Then I can see coolness even when I close my eyes. तो वो When I एनर्जी. opened my eyes, it was a magnetic energy. It was interesting to look at. वो जो सुख था अंदर का अनुभव था. It was an internal experience. गर्मी होती है, बहुत गर्मी है. Like when there is a lot of हवा का झोंका लगता है. heat and you have सेंसेशन होती a beautiful breeze and you have the tingling sensation. रही थी. Then I was also having that inner tingling आने लगा. happiness, but also मैंने कहा ये I blocked it with my fear. जादू करती हैं. Then I was thinking maybe these Brahmakumaris do some magic. मैं डर गई. I was scared. मैंने कही क्या है.
Then महात्मा जी जादू कर रहे हैं, maybe this Guruji संभालेगा। is doing some magic. If something happens to me, who will take care of me? जाने दिया था कितनी उम्र थी दीदी आपकी उस समय? हमारी मदर हमारी मासी के साथ आपकी उम्र कितनी थी दीदी? 16 years। Didi was nearly a 15-16-year-old. मैं देखूं माँ कहाँ बैठी है, Then she was looking for her mother. का संबंध आया सामने। See, as soon as this body relationship came in between, and the fear रिजेक्ट कर दिया जो मुझे अनुभव rejected that experience, whatever I was मैंने उस समय नहीं लिया। I did not take that experience in. बहुत अच्छा था जी जब मेरे को ये थोड़ा समझ मिली, ज्ञान मिला, As soon as I got a little knowledge, वो जो पहले अनुभव ने क्यूरोसिटी क्रिएट की। it created curiosity, definitely. कौन था? Who is that? मेरे को कॉलेज में बताया था। One sister, it was my college friend who had invited me. पर मैं गई थी तो उसने I went on basis of that, and she had explained me that it's God's light, and क्यूरोसिटी ने मुझे I was इंटरेस्ट curious, and that created interest in knowledge. वाला नहीं था, मैं खुद ही मुरली There were nobody to explain knowledge. I used to read murli and literature. There was no teacher. अनुभव और इंटरेस्टिंग था, टाइम फिनिश होता हाँ है। सुना दीजिए दीदी। जब मैंने ये रियलाइज किया कि आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, When I realized I'm child of God, आई एम सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, I'm soul, I'm child of God. बी स्टडीइंग बी एट दैट I was studying BA at that time इकोनॉमिक्स वर में सब्जेक्ट्स। in political science and political science. कॉलेज से आ रही थी I was coming from college. से, तो वो ये जो टच हो रहा आई एम सोल, Uh, चाइल्ड ऑफ I was remembering I am a soul and I'm child of God. I was thinking of, परमात्मा की संतान, शरीर नहीं हूँ, am I really the child of God and I'm not this body? शरीर में हुई नहीं। The minute I realized I'm not this body, I'm sitting in the bus, I'm coming from the college, then what is this? अपने आप से बात की, I was talking to myself. अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर ये क्या है? If I'm not this body, then what am I? I'm this body. मैं वास्तव में शरीर तो नहीं हूँ, ये तो समझ आ गई। Then, मैं बस से उतरी as soon as I got down from the bus, कि मैं सचमुच में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, I am really a soul, I'm not a संतान हूँ। body, and I'm child of God. मैं जब चल रही थी As I was walking towards center, I used to go to center straight from college. सेंटर पर 132 o'clock, I used to go to center at 1:32. There was nobody at center at that time. I used to read on my own. ऐसा लगा जैसे कि I felt as though चल रही हूँ, I'm walking, मैं तेरे पैर ऊपर, but I'm floating. और मुझे लग रहा है जैसे कि थोड़ा ऊंचा, यानी जैसे मैं उछल के चल रहा है, मैं उछल नहीं रही थी, It felt as I was floating, flying, but not walking. धरती पर नहीं लग रही My feet were not touching the ground. थी बहुत। I could experience lightness in the body. तो हवा चल रही, तो सूखे पत्ते घास के, पत्थर पतझड़ का मैं समय था, तो पत्ते मेरे पैरों में लगे। There were so many की बात है, dry leaves which were touching my feet. तो मुझे लगा अरे मैं कॉन्शियस हुई, मैं कैसे Then I suddenly became conscious. सभी लोग हैं क्या कहेंगे, What will everybody think? कैसे रही है, That how is this girl walking? She's floating. से नीचे उतरी, जैसे The minute I had this thought, it was I just fell down. गिरने का, मुझे बिल्कुल 100% यही महसूस हुआ। I exactly felt as I fell down. थी ऊपर उड़ रही, I was flying up and I suddenly fell down. तो देह का संबंध So, बाबा कहते so it is a body, हैं, इसका bodily relations pull us down. I experience this practically. इतना सुंदर अपना अनुभव हम सबके So सामने thank you, रखे Didi, और for सच sharing में such कैसे a हम beautiful बाबा के experience in सुख front को of, अपने साथ and कर सके how और to इस जीवन की experience यात्रा को कैसे godly हम सरल और happiness सहज बना with us सके। and make this godly student life and godly life very easy. समय निकाल कर के आए You have taken out your सभी भाई बहनों की valuable तरफ से time for us. बहुत बहुत So on behalf of all brothers and और आगे कभी sisters, समय मिलेगा तो दीदी की I पूरा thanks a जीवन lot. कहानी, आपने तो अभी थोड़ा सा टेस्ट कराया Didi has just given a glimpse of her life story. We will listen to full story later on. सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks to all the brothers and sisters who are seated here. We remember Baba for 2 minutes.
तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चल कर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, रूहे गुलाब बन अब खुशबू जहां को देते, कांटों में भी संभल कर सबका जीवन सजाते। तेरे करीब लाकर तुझसे मिलन कराए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, वो जो आपने पूछा ना कि लौकिक में जाते क्या बात है जो नहीं जा सकते, यानी कि भूल जाता है, So when you're going तो to काम Lokik, करते समय when you're doing your work, यानी एक्चुअली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट this is है, a very important जॉब aspect. कर रहे When you're हैं, doing खाना a बना रहे हैं, job, कुछ when you're doing any physical काम work, करते समय और लौकिक में especially in the मेन Lokik, जो सपोर्ट है the main हमको, support वो है is हमारी धारणा। our dharana. ज्ञान योग की धारणा वहाँ चाहिए। So the dharana of knowledge हम and उस yoga समय is समझते needed बाबा there. याद नहीं रहता, बाबा की याद वहाँ काम नहीं करेगी, Their वो Baba's याद आएगा remembrance will नहीं। not work याद there. से जो धारणा बनाई है Whatever जॉब में वो dharana, यूज करनी है, what we have developed will वो be भी फिर used क्या there. हुआ, समझ हो गई ना, That's also फिर understanding. वापस आ जाता है ज्ञान। Again, it's coming समझ back to मतलब मैं यूज understanding. कर रही हूँ वो I'm जो बाबा की understanding the मिली हुई knowledge. नॉलेज है, वो ज्ञान उस वक्त योग का काम कर रहा है। So the योग नहीं लगाना है उस knowledge समय, is working जैसे as बाबा ने yoga. कहा You बिंदु don't have to बिंदु do को yoga. नहीं याद करो, Baba बिंदु says याद don't करेंगे तो आप just कंफ्यूज हो जाएंगे। keep तो thinking ये you have भी to remember उस समय point, योग की point, बात नहीं point. सोचो, No, don't उस think of समय yoga. धारणा की बात सोचो। At that time, ये है think रियल आंसर। of virtues. Okay? This is a real answer.